वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम मुस्कान एंड आई होप आप सब सही होंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यू जस्ट हैव टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, दैट्स इट। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 बज रहे हैं अभी। एंड अभी मैं उठी हूँ सो के, एंड बस सो के उठी हूँ एंड फ्रेश हो गई हूँ। सो अभी आज मैं रेडी होने जा रही हूँ बिकॉज़ आज हमारा लास्ट डे है यहाँ बैंगलोर में। सो अभी हम अराउंड 8 या 8:30 तक चेकआउट कर जाएंगे यहाँ से, एंड देन यहाँ से फिर डायरेक्ट हम ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे अपना एग्ज़ाम देंगे, एंड फ्रॉम देयर विल गेट फ्री अराउंड 5 और 5:30 तक वहाँ से भी फ्री हो जाएंगे। एंड देन वहाँ से हमें डायरेक्ट कैब मिलेगी एंड वो हमें एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेगी। देन एयरपोर्ट से फिर टुडे ओनली आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली। सो बस यार, आज लास्ट डे है बैंगलोर में एंड 2 दिन बहुत ही अच्छे गए। सो चलो अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून, वॉच दिस व्लॉग टिल एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली हम रेडी हो गए हैं, एज यू कैन सी ब्यूटीफुल एयर एशिया क्रू। हाँ, सो अभी हम रेडी हो गए हैं एंड आज हमारा लास्ट डे है बैंगलोर में। फाइनली बट एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। 2 दिन बहुत मजा। हाँ, मन तो बहुत क्या करें, एंजॉय तो बहुत किया। सो अभी हम क्या करने जा रहे हैं अक्षिता? अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फोटोज क्लिक करेंगे। अच्छा, पहले फोटोज क्लिक करेंगे। हाँ। खाना पीना तो होता रहे, क्योंकि लास्ट डे अभी अच्छे से नीचे जाके खाएंगे। सो सबसे पहले हम फोटोज क्लिक करेंगे, फिर हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। सो कैच यू लेटर, बाय। It's time to say bye to this beautiful room, and seriously मैंने 2 दिन बहुत enjoy किया है यहाँ पे, and I will remember this। and जो last के 2 दिन थे वो बहुत ही अच्छे गए हैं, बहुत enjoy किया है, and this is such a beautiful room। say bye, say hi। मैं क्यों नहीं दिख रही हूँ? ऐसे दिखेंगे, मतलब मैं दिख ही नहीं रही हूँ। ये रही मैं। बाय।
वीडियो नहीं भेजी यार, ठीक है वीडियो नहीं भेजी। कौन सी वीडियो? स्नैप नहीं है, Guys, so we are waiting here for our instructor so that he can come and take our classes. So guys, अभी हमारे इंस्ट्रक्टर आए थे एंड ही सेड कि आज का पेपर बहुत टफ होने वाला था। आई एम काइंड ऑफ नर्वस क्योंकि मैंने कल कुछ नहीं पढ़ाई करेगी बहन। ये लड़की टॉप करेगी आज, ये ऐप से इंस्ट्रक्टर बनेगी। हाँ, हिमानी फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर बनेगी। बस तुम क्या बनोगी? ये है ऐसा कब हुआ? ये कब कैच ट्रेनर है? यार आप लोग सोच रहे होंगे एकदम से मैंने चेंज कैसे कर लिया है। सो अभी मैं हूँ तो वहीं पर अपने ऑफिस पे ही हूँ, बट अब हम यहाँ से डायरेक्टली एयरपोर्ट जा रहे हैं। सो हमारी क्लास कंप्लीट हो गया है एंड मैं आपको अपना रिज़ल्ट बताऊंगी कि मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा है। बट उससे पहले मैं आपको जस्ट ये मेंशन करना चाह रही हूँ कि अभी हमने चेंज कर लिया बिकॉज वी आर गोइंग टू एयरपोर्ट। हमारी फ़्लाइट है नेक्स्ट 1 आवर में। गाइस, तो कैब में भी बैठ गए हैं हम एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। सो बस अब वहीं जा रहे हैं यार। होटल तो जा नहीं सकते, चेकआउट कर लिया है लिटरली। 2 दिन मेरे बहुत अच्छे गए हैं। सो थक गई हूँ मैं काफ़ी। सो गाइस, दिस इज़ द कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब यहीं से स्टार्ट होता है। एंड आज मैं यहाँ पे मतलब जा रही हूँ ना, यहाँ से मुझे सीरियसली अपने ट्रेनिंग डेज़ याद आ रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग पहले यहीं पे हुआ करती थी। ये जो आप साइड में बिल्डिंग देख सकते हो ना, ये एयरपोर्ट के जो ये हाँ जहाँ मैं शो कर रही हूँ, सो यही वो जगह है जहाँ पर हाँ यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुआ करती थी। एंड यहीं पर एक कैंटीन हुआ करता था जहाँ हम हमेशा लंच के लिए या फिर डिनर के लिए जिस भी टाइम हमारी ट्रेनिंग हुआ करती थी जो जाते थे। सीरियसली मुझे आज बहुत याद आ रहे हैं वो दिन, जैसे हमारी जो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। सीरियसली आई एम मिसिंग दोज डेज़ अ लॉट। सो बस एयरपोर्ट भी पहुंच गए हैं एंड फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको, एयरपोर्ट टूर करवाऊँगी क्योंकि अभी टाइम है बहुत। सो चलिए चलते हैं। स्माइल अक्षिता। अक्षिता तेरी सिर्फ एक आँख आ रही है, हम कितने थके हुए हैं। एयरपोर्ट पे एंट्री कर ली है, बट मैं इतना बोर हो रही थी यहाँ पे आने के बाद। हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट डिले है 8 बजे। अब हमारी फ़्लाइट है, पहले 7 बजे होने वाली थी। तो अभी हमें यहाँ पे 2 घंटे और वेट करना पड़ेगा एंड मैंने सोचा कि मैं बैठ नहीं सकती हूँ, सो घूमने चलते हैं।
गाइस अब और नहीं मैं एयरपोर्ट पे घूम सकती हूँ, इतनी टायर्ड हूँ मैं सुबह से। लाइक एयरपोर्ट तो मतलब होटल से भी चेकआउट कर लिया था एंड देन लाइक अभी तक हम ऐसे ही घूम रहे हैं। बस वेट अ सेकंड, लेट मी सेट माय कैमरा। या परफेक्ट है। सो एग्ज़ाम का अपडेट देती हूँ। एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला गया मेरा एंड देन मैं पास भी हो चुकी हूँ एंड थोड़ा टफ था लेकिन हो गया एग्ज़ाम मेरा। एंड वी कैन से कि मेरे फुल मार्क्स आए हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन सारे आंसर एंड आई एम सो सॉरी, आई एम सो टायर्ड। बस वेट करूँ जल्दी से एयरक्राफ्ट आए दिल्ली में पहुँचूँ। Your mind was on, yeah. Ooh, your mind was on. एयरक्राफ्ट आ गया है। नाउ हम एंटर करने जा रहे थे एयरक्राफ्ट में। मैं इतनी थक चुकी हूँ, बस मेरे को एयरक्राफ्ट में भी बैठने का मन करे। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे फटाफट घर छोड़ दे बिकॉज मैं बहुत थक गया। मेरा पूरा हेडेक हो रहा है यार, और ये मेकअप की वजह से और भी मेरे को इरिटेशन हो रही है। छोरों को अलग कर दीजिए। यदि इस प्रकार का ऑक्सीजन लगाव आपकी कुर्सी के ऊपर लगी पैनल से बाहर आए तो उसे तुरंत अपनी ओर खींचे और इस तरह बहुत और ज़्यादा मुंह ढककर जैसे सामान्य लगता ढंग से है सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना नकाब ठीक से पहन ले। आपकी रक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे रखी है। यदि आपातकालीन स्थिति में विमान It's so special. Boy, it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're mine, oh. Just so you know, you're mine for sure. वीडियो बना रही हूँ। प्लीज वेयर मास्क मैम। आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट टू सी योर फेस। प्लीज वेयर मास्क प्लीज। नो अभी लंबी फ्लाइट थी, बता लंबी फ्लाइट थी, खत्म हो गई थी। मैं गिन रही थी बैठ के, फिर टाइम गिन रही थी। फिर घर आ गए, आ गया। आ गए। फिर अब मैं घर जाऊँगी, उससे क्या होगा? फिर सोऊंगी, वैक्सीनेशन लगवा लेना। फिर से फ्लाइट पे जाऊँगी। 100% वैक्सीनेटेड हो जाना जल्दी। 1% वैक्सीनेशन, 99% फर्स्ट डोज लग गई है, सेकंड डोज। कितना किचर पिक्चर है, देख रहे हो? किचर पिक्चर, या किचर पिक्चर। Just stop recording me, I said. It's so special. Boy, it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just गाइस फाइनली दिल्ली में मैं आ चुकी हूँ। मैं दिख नहीं रही हूँ, आपको एकदम अंधेरा हो रहा है। सो
यार आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मैं बहुत थक गई हूँ एंड अभी रात के 2 बजने वाले हैं। सो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरे 3 दिन का जो बैंगलोर का व्लॉग था, इससे पहले भी जो व्लॉग्स थे, आपको अच्छे लगे होंगे। आपको ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। सो फाइनली मैं दिल्ली आ चुकी हूँ। अब घर जाऊँगी एंड सो जाऊँगी बिकॉज़ मेरी बॉडी में एकदम एनर्जी नहीं बची है। लाइक सुबह से हम निकले हुए हैं एंड अभी तक अब 2 बजे रात को मैं घर जा रही हूँ। सो आई एम सो टायर्ड, सो और मुझे हेडेक भी हो रहा है। सो अब मैं कैब में ही सो जाऊँगी। सो चलो गाइज़, बाय बाय।